अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के जो एस्पिरेंट्स हैं जो उसके लिए पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, उनका अब एग्ज़ाम 8 मार्च को है और एडमिट कार्ड भी उससे पहले 2-4 दिन आ जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया है इन्होंने जेकेएसबी वालों ने। तो आज हम मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लाएँ ताकि आप सबकी प्रैक्टिस हो सके, और जितने भी बाकी जेकेएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं वो भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश का और मैथ और रीजनिंग का। और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इससे थोड़ा डिफरेंट है, वो आपके एग्ज़ाम्स में नहीं है, वो सिर्फ जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्ज़ाम में है। तो रूल कुछ ऐसे होगा, मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, उसके 4 ऑप्शन है वो पढ़ूंगा, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अपने साथ एक नोटबुक रखो, नोटबुक में लिखो क्वेश्चन नंबर 1, फिर ऑप्शन आपने क्या दिया या ऐसे भी याद रख सकते हो, फिर आपने काउंट करना है कि आपने कितने सही किए। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द हाइपोथेटिकल सिचुएशन इफ द रेंजर्स वुड अराइव अर्लियर, या अराइव्ड, या हैव अराइव्ड, या हैड अराइव्ड, द फॉरेस्ट फायर कुड हैव बीन कंटेन्ड। बताओ यहाँ पे क्या लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, हैड अराइव्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते, मैं भी एज एस्पिरेंट इन्हें अटेम्प्ट करूँगा और देखते हैं हमारा स्कोर कितना रहेगा, और आपने अपना स्कोर भी शेयर करना है कमेंट में कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल। इट इज़ द, या इट इज़ एनी, या इट इज़ एन, या इट इज़ ए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द स्नो लीपर्ड इन द वाइल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है बताओ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चूज द मोस्ट सुटेबल एंटीनिम फॉर द वर्ड टेसिटर्न। एंटीनिम बताना है आपने इस वर्ड का। टेसिटर्न का मतलब होता है चुप या रिजर्व्ड। जो गैरुलस है उसका मतलब है एक्सेसिवली टॉकेटिव। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिस चीज़ को पता था। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रेफरिंग टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, द अथॉरिटीज वर ब्लाइंड टू द रैम्पेंट पोचिंग इन द बफर जोन, या एट द, या विद द, या ऑफ द। बताओ क्या लगेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पंक्चुअस? मेटिकुलस, इनफॉर्मल, एग्रेसिव, या केयरलेस। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है? मेटिकुलस, ऑप्शन ए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर। ए फ्यू स्टूडेंट्स, द फ्यू स्टूडेंट्स, लिटिल स्टूडेंट्स, क्या लगेगा यहाँ पे बताओ। तो द फ्यू स्टूडेंट्स इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चूज द राइट फ्रेजल वर्ब। यू मस्ट कट आउट फॉर, या कट डाउन फॉर ऑन योर एक्सपेंसेस इफ यू वांट टू सेव द ट्रैक। यू कट ऑफ, या कट अक्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कट डाउन ऑन। करेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द फॉरेस्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, या देन इट, या देन इट, या दैट इट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। विच ऑफ दिस इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गॉड इज पेट्रोलिंग द कोर एरिया? The core area was being patrolled by the god. The core area is patrolled by the god. The core area is being patrolled by the god. The core area has been patrolled by the god. बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इन विच ईयर डिड द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऑफिशियली केम इनटू इफेक्ट?
बताओ। 15 अगस्त, 5 अगस्त या 1 अगस्त, 1 जनवरी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर 2019। और 31 अक्टूबर जो 31 अक्टूबर है, इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? का लास्ट रूलिंग महाराजा कौन था? मैं आपको एक हिंट भी दूंगा, ये वही महाराजा है जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ 1947 में। तो ये कौन है? महाराजा हरी सिंह इज करेक्ट आंसर। The Treaty of Amritsar 1846 is also referred as a sale deed by some historians because sale deed Gulab Singh paid 75 lakh Nanak Shahi rupees to the British bought J&K from the Sikhs. Sikhs stole the territory to Dogras, Indonesian. Option B is correct answer. Gulab Singh paid 75 lakh Nanak Shahi rupees to the British. Which among the following authors wrote the famous historical account of Kashmir titled Raj Tarangni? राज तरंगनी किसने लिखी है? बिल्हाना, कल्हाना, जोना राजा या अबुल फजल? राज तरंगनी कल्हाना ने लिखी है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 which schedule provided the highest level protection to species like the tiger and hangul? कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल से 5th, 1st, 6th, 2nd? ऑप्शन बी इज करेक्ट, शेड्यूल 1st। Which of the states in India shares the longest international border with a single country? Which of the states in India has longest border? तो सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर कौन शेयर करती है कंट्री? कौन सी कंट्री? तो वो वेस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश से शेयर करती है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयरिंग विद बांग्लादेश। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? Gradual process by which ecosystem change develop over time, the movement of energy through a food web, the competition between two similar species, the process of species extinction। तो मैं पर्सनली ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा और ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द रेड लिस्ट ऑफ threatened species uses several criteria. A species is critically endangered if its population has declined by more than over 10 years. करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज 90%। 90% is correct answer. In which city was the first session of the Indian National Congress was held in 1885? किस सिटी में हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन, वो कहाँ पर है? बॉम्बे में, तो इन बॉम्बे। The second law of thermodynamics explains why which of the following happens in an ecosystem? And it cannot be created or destroyed. Energy is lost at heat at each tropic level. Population size stays constant. Matter cycles within the ecosystem. Which one is correct? I think option B is correct, and I am sure about this one. What is an ecotane? Method of counting wild animals. Specialized area for bird nesting. A transition area between two biological communities. A type of deep sea forest. Which option is correct? Option C is correct. और जो ऑप्शन सी के साथ गया उसका ये क्वेश्चन ठीक है। The National Tiger Conservation Authority (NTCA) was established following the recommendations of which task force? कस्तूरी रंगन कमेटी, सरकारिया कमीशन, गदकिल पैनल, टाइगर टास्क फोर्स। Which one is correct? Tiger Task Force is correct answer. Tiger Task Force. Which of these forest types in India characterized by the presence of pneumatophorus breathing roots? मैंग्रोव जो होते हैं वो ग्रो करते हैं कहाँ पे? ऑक्सीजन पुअर सैलिन सॉइल पे, और यूज़ होते हैं स्पेशलाइज्ड रूट्स टू ब्रीथ एयर।
That's why option D is correct answer. Who was the founder of the Satavahana dynasty in ancient India? मैं जाऊंगा ऑप्शन बी के साथ। सतवाहना डायनास्टी का फाउंडर कौन था एंशिएंट इंडिया में? सिमू का। ठीक है, इज करेक्ट। द फिनोमिना ऑफ कोरल ब्लीचिंग इज प्राइमरी caused by इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग, ओवर फिशिंग ऑफ शार्क्स, या ऑयल स्पिल्स इन द ओशन, या इंक्रीज इन द सी सरफेस। ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर गाइडलाइंस, what is the buffer zone used for? Building massive tourism hotels, absolute protection of tigers only, exclusive military training, sustainable human activities, and habitat connectivity. Option D is correct answer. Which of these is the only floating national park in the world? Kaziranga, Dachigam Marine National Park, Gulf of Kutch, Kibul Lamjo National Park. केबल लमजो आन लोकटक लेक कहाँ पर है, किस स्टेट में है? मणिपुर में। एंड इट इज़ द फेमस फॉर इट इज फ्लोटिंग फ्रॉम डेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इन कीनिया वाज लेड बाय विच नोबेल प्राइज laureate? वंगाड़ी मथाई, मलाला यूसुफजाई, देशमुख तुतु, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वंगारी मथाई। What does the term endemic mean in the context of wildlife? A species found only in specific geographic location, a species that migrates slow across continents, a species that has gone extinct, species that is harmful for its environment. Which option is correct? Option A is correct. ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। Which among the following is the state animal of Ladakh? हांगुल जम्मू एंड कश्मीर का है। लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन सा है? स्नो लीपर्ड। In the carbon cycle, which process removes CO2 from the atmosphere? Which process? Plants absorb CO2 and use sunlight to convert it into energy. Photosynthesis is correct answer. अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। विच ऑफ दिस इज अ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? Which of this is a non-point source of water pollution? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छे से देख लो, फिर आप बोलते हो आपने आंसर हमको नहीं दिखाया। विच मुगल एम्पायर विजिटेड कश्मीर एंड फेमसली बिल्ड द शालमर बाग? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे और मैं पर्सनली इसका आंसर देना चाहूँगा जहांगीर। जहांगीर ने शालमर बाग अपनी बीवी नूर जहाँ की के लिए बनाया था 1619 में। ठीक है, जहांगीर इज करेक्ट ऑप्शन। The biosphere reserve concept differs from a national park because it focuses on eliminating all human presence, conservation, sustainable development, and research. Fencing the entire area with walls, only protecting large mammals. Option B is correct answer. What is the primary function of the Coriolis effect in nature? Deflecting the direction of winds and ocean currents, generating geothermal energy, causing the tides, triggering volcanic eruption। बताओ इसका आंसर क्या है?
जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो, इसका आंसर सोचो, जल्दी से कॉपी पे लिखो, इसका क्वेश्चन नंबर लिखो, फिर ऑप्शन लिखो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आंसर रिवील करने से पहले आपने अटेम्प्ट करना है, सोच लेना है उसका आंसर, क्योंकि आपने कहीं पे फिल तो नहीं करना, OMR तो नहीं भरना, इसलिए आप एक कॉपी रख लो अपने पास, उस पर लिखो नोटबुक पे। द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 was launched after the failure of which mission? सेमन कमीशन, वेवल, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया। इन JNK which tree is known as a state tree? देवदार, चिनार, काइल, वालनट। तो आप सब ने सोच लिया होगा, इसका आंसर दे दिया होगा आपने, चिनार इज करेक्ट आंसर। ठीक है। प्लेंटेनस ओरिएंटलिस साइंटिफिक नेम ऑफ चिनार। विच ऑफ द, जिसे कश्मीरी में बूंद कहते हैं, विच ऑफ दिस इज अ वर्मिंग स्पीशीज एज पर द अनअमेंडेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? वाइल्ड बोर, फ्रूट बैट्स, ब्लैक बक, कॉमन मैंगोज। ब्लैक बक इज, fruit bats is correct answer. What is the primary cause of eutrophication in water body? Dumping of plastic waste, excessive input of nutrients like nitrogen and phosphorus, thermal pollution from power plants, accumulation of heavy metals. Which one is correct option? Option B is correct. Who was the founder of Gupta dynasty in 240? C. Sri Gupta, Samudra Gupta, Kumara Gupta. तो कौन था फाउंडर गुप्ता डायनास्टी का? जैसे कि आप सबको पता है, श्री गुप्ता was the founder of Gupta dynasty. Nishad Bagh in Sharmar was designed and built by Asif Khan. Asif Khan is correct answer. What is the albedo of a surface? Amount of hot heat it absorbs. The measure of the reflectivity of a surface, the depth of topsoil in a forest, the speed of water flow in a river. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। Which schedule of the Wildlife Protection Act lists the vermin and can be hunted? राइड्स एंड क्रोज जो होते हैं उनको कहते हैं, उन्हीं को वेरमिन कहते हैं। रैट, क्रो, तो एक किस शेड्यूल में? शेड्यूल 5 इज करेक्ट आंसर। व्हाट डज ट्रॉपिक लेवल डिस्क्राइब इन इकोसिस्टम? द रेट ऑफ फॉरेस्ट ग्रोथ, द एज ऑफ स्पीशीज, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द पोजीशन एंड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइड इन अ फूड चेन। बताओ, इन विच स्टेट नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तो किस स्टेट में है ये? कर्नाटका में। Which constitutional amendment made the right to education fundamental right in India? 86th amendment। ठीक है। What is the primary objective of the project Tiger? का primary objective बताओ। Ensuring a viable population of tigers in their natural habitats, to domesticate tigers into zoos, to increase tiger population for export, establishing tiger hunting grounds for tourists. Option A is correct answer. Which of these is a biotic factor in our ecosystem? Bacteria, sunlight, humidity, soil pH. Bacteria is correct answer. Who was the Viceroy of India when the partition of Bengal was announced today? बताओ, चलो खुद ऑप्शन पढ़ो। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन इज करेक्ट आंसर। In the context of the environment, what does BOD, biochemical oxygen demand, indicate the density of algae in a pond, the total volume of water in a reservoir, the amount of dissolved oxygen needed by microbes to decompose organic matter, the amount of oxygen produced by fish? Option C is correct answer। ठीक है।
अब हम आगे बढ़ेंगे। आप सबने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर केयरफुली इन ही वॉकड केयरफुली थ्रू द स्वैम्प। ली एंड डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। विच स्पोर्ट इज प्लेड विद अ शटलकॉक। शटलकॉक से कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या टेनिस? बैडमिंटन इज करेक्ट ऑप्शन। द दुरंत कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट इन इंडिया। दुरंत कप किससे मुंसलिक है? दुरंत कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विच हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसको कहते थे? मिल्खा सिंह को। इन विच सिटी इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला। तो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में। कथक क्लासिकल डांस फॉर्म इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच रीजन? साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया। तो कथक शायद उत्तर प्रदेश से आया है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू इज करेक्ट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट was launched in which year? 1942, 1930, 1945, 1940? 1942 is correct answer। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ अटेम्प्ट करने के लिए, आप टाइम लेके अटेम्प्ट करो। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 से 10 सेकंड देता हूँ। गोदावरी, ठीक है। विच ऑफ दिस स्टेट शेयर इट इज बॉर्डर विद म्यांमार। इनमें से आपने वो स्टेट बतानी है जो अपना बॉर्डर म्यांमार से शेयर करती है। आसाम भी नहीं करती, त्रिपुरा भी नहीं करती है, मेघालय। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नागालैंड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? आइजवाल, शिलोंग, कोहिमा, इम्फाल। Capital of Mizoram is Aizawl. Which gas is essential for photosynthesis in plants? Carbon dioxide. Which organ is the human body filters the blood? Kidney is correct answer. Which of these is a water soluble vitamin? Vitamin A, K, D, C. Vitamin C is correct answer. What is the largest district in the United Territory of Jammu and Kashmir by area? Kashtwad is correct answer. Famous Dal Lake is located in which city? Srinagar is correct answer. Which of these is a major cause of deforestation? बताओ इसका आंसर। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हेवी रेनफॉल, प्लांटिंग ट्रीज, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इज करेक्ट आंसर। What is biodiversity? Type of chemical pollution, variety of life on earth, the study of rocks, the method of planting crops.
Variety of life form. Which of these is an example of endangered bird in India? Sparrow, common crow, pigeon, great Indian bustard. Great Indian bustard is correct answer.